Continuing my project. Okay, we're live. Right. So it's a rare occasion. I'm streaming in the day. It's not like 1 a.m. in the night. I had to wake up early today because I had a meeting in the morning. So I thought, why not just stream? So I'll actually be doing the question which I couldn't solve in yesterday's contest, the third question. Yeah, I I took a hint, and it's a new technique that I haven't really ever used. I haven't seen the code, I haven't solved it yet, but I'll be solving it today. The third question in yesterday's contest. Wait, what is this guy saying? And okay, bro, Parth is here. Bhai, are you that Parth from LinkedIn? Yeah, so this is the question. You're from LinkedIn, right? Oh, hi, bro. Bro, let me just put it on Do Not Disturb. What's up? Hmm. So let me go. Good. Give give me a question. Give you a question. Try solving yesterday's contest, bro. Like, do this question. I think this is a good question. Leetcode 3727. Yeah, this is a good question. It requires a bit of an observation. Do not go too deep in the logic. Just try to observe. Yeah, this is a good question. Okay, right. So let's say we have an array. It has a value 9, 3, 3, 3, again 9. Let's let's give it minus minus 3, minus minus 3, minus 3, minus 3.
minus 3, that's going to cancel out 2 3s, and we want a minus 12. No, but that's going to minus 3 and another 9. Okay, so we'll have these three stable subarrays, these three stable subarrays here. Huh. Okay, so if this is our array, now check the stable subarrays here. This is a stable subarray, and mm, this is a stable subarray, right? And this is a stable subarray, this one, because this is 9 18, this is 9, this is 9, this is 9. So this is a stable subarray. So for stable subarray, you would want stable subarray from L to R. You would want array of L equals to array of R equals to prefix sum. This is your L, this is your R, equals to array of R minus array of R minus 1 minus array of L minus prefix sum. Okay, sorry, prefix sum of R minus 1, R minus 1, prefix sum of R minus 1 minus prefix sum of L, right? Prefix sum of R minus 1 मतलब this minus this. Yeah, makes sense. ठीक है, so this is our condition. This is our condition. Okay. Now what I saw in the hint is that for this type of question we have to use a nested unordered map. I've never used it. I never even thought about it. So that's why I couldn't solve this question, but it makes very sense if you think about it after I got a hint. So the logic is stable subarray सिर्फ same elements पर होगा. जैसे 9 और 9 मिला तो तभी आप चेक करोगे कि stable subarray है कि नहीं, right? अब so we'll keep iterating. We keep iterate through the array and we'll make a prefix sum. We'll make a prefix sum. Right, keep it like this. Okay, so this is a condition. We'll iterate through the array. When you come here, you can say you found 9 with a prefix sum. अब आप ये एक मैप है, मैप के अंदर भी एक मैप स्टोर होएगा. That is what this question is about. तो 9 मिला with a prefix sum of 0. Prefix sum of 0, right? Prefix sum of 0, or we'll store with a prefix sum of 9. Let's see. Prefix sum of 0. Okay. फिर आप देखोगे 3 मिला with a prefix sum of 9, right? Because 3 के लिए prefix sum अभी हम ये लेकर चल रहे हैं. Let me see. 3 मिला with a prefix sum of 9. फिर 3 मिला तब prefix sum हो जाएगा आपका 12. अब हम करेंगे क्या?
Wait. Yes, last night I solved that question using unordered map. Okay भाई, you could solve that question. Wow, मुझसे नहीं हुआ था भाई ये. Fast bro, what's your rating? And what's your rating? हाँ, अब द पॉइंट इज, इधर आएंगे तो हम देखेंगे क्या कोई 9 मिला है इससे पहले. नहीं मिला तो ऐड दिस 9 मिल गया है. 3 इधर आएंगे, कोई 3 मिला उससे पहले. नहीं, नहीं मिला. ठीक है, अब इधर आएंगे, हम देखेंगे एक 3 मिल रखा है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि पिछला 3 और ये 3 वैलिड है? आप चेक करोगे. आप क्या कर सकते हो, आपके पास इस 3 के टाइम इतना सम होगा एज प्रीफिक्स सम, और इस 3 के साथ जो आपने स्टोर कर रखा होगा फिर वो होगा इतना. सो यू कैन से प्रीफिक्स सम ऑफ करंट प्रीफिक्स सम माइनस पहले वो जो 3 का प्रीफिक्स सम था माइनस वो जो प्रीफिक्स सम था, दैट शुड बी इक्वल टू 2 ऑफ योर करंट वैल्यू. 2 ऑफ योर करंट वैल्यू आई थिंक. हाँ, क्योंकि ये तो 3 होना चाहिए, है ना, और ये भी हो जाएगा. हाँ, दैट ओके. आई सी दैट. ये लॉजिक है. और फिर उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कराते जाओ, स्टोर कराते जाओ. What am I doing? What's long about here? The long is number of stable sub arrays. अच्छा, इसलिए long कर रखा है. ठीक है, तो एक तो iterate through entire array, store, make a map which has key equals to int and value is a second map. ठीक है ना, value is a map itself. जो inner map होगा that will have prefix sum and the frequency of that prefix sum. ठीक है, prefix sum को ओके ठीक है. अब किसी भी इंडेक्स पे चेक कि वो एलिमेंट मैप में है कि नहीं. अगर मैप में है तो चेक इफ यू हैव अ, जो इनर मैप होगा दैट विल हैव प्रीफिक्स सम एज, अंदर वाले मैप की होगी प्रीफिक्स सम एंड द फ्रीक्वेंसी, और उसकी वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट प्रीफिक्स सम, ये होगी वैल्यू equals to frequency of that prefix sum. Leetcode 3728. Yeah, here it is. It has 20% acceptance rate, so it was kind of tough. अगर मैप में है, हाँ, और वैल्यू होगी, ठीक है ना, ये है. अगर मैप में, अब किसी भी इंडेक्स पे चेक करो कि वो एलिमेंट मैप में है कि नहीं. अगर मैप में है तो चेक इफ यू हैव
a prefix sum equals to ये वाला पिछला प्रीफिक्स हम चेक कर रहे हैं, इक्वल्स टू 2 स्टार करंट वैल्यू प्लस 2 स्टार एलई प्लस करंट प्रीफिक्स सम, ठीक है ना। अगर है तो add the frequency of that prefix sum in the answer. So this is the logic. id path. Okay bro, let me check. You're telling me why should not you take k as value prefix sum instead of nested map? Why should you not take k? Bro, which k are you talking about? वैल्यू और प्रीफिक्स सम, हाँ वैल्यू और प्रीफिक्स सम से मैंने क्या कहते हैं, जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें ऐसे ही करा था कि फर्स्ट यू कैलकुलेट द प्रीफिक्स सम और फिर आप देखो कि जहाँ जहाँ पे भी ये एलिमेंट सेम है फिर वो प्रीफिक्स सम का डिफरेंस निकालो थ्रू द रेंज, उससे टीएलई आ रहा था, टाइम लिमिट एक्सीडेड हो रहा था, इसलिए हमें ये अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। दिस इज लेस देन एन स्क्वायर, वो वाली अप्रोच जो आपकी है दैट विल गो टू एन स्क्वायर, वही मैंने ट्राई करा था एंड उससे टीएलई आ रहा था। Bro, let me check your ID. Okay, bro. Civil subarrays and interior sum. Okay. So you've just started. You've just started. Cool, bro. 1480. Nice. Just stay consistent, bro. Just stay consistent. अगर है तो add the frequency. Okay. So we want to make an unordered map. This unordered map will have your key as int and will have a unordered map as your value. इसके अंदर भी आपकी की होगी प्रीफिक्स सम, तो प्रीफिक्स सम वुड बी prefix sum. Okay, prefix sum can go to long, that's why. Okay, prefix sum और int, वो prefix sum का क्या वैल्यू आएगी? outer map की equals, outer map की है आपका element, inner map की है आपका prefix sum, inner map की वैल्यू है prefix sum की frequency। हाँ, और हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी फिर आप प्रीफिक्स सम। ओके ऑलराइट, तो अब आप ले लो int prefix sum equals to 0, int I equals to 0, and n equals to capacity dot size while I is less than n। इसमें लास्ट वाले एलिमेंट पे तो कुछ नहीं होना चाहिए ना? हाँ, it wouldn't be right। अब आप चेक करोगे int current tally equals to RRI, current tally equal to RRI, and check करो कि current has been seen or not। This should be outer hash। if current dot find, not current, outer hash dot find current LE is not equal to outer hash dot end, चेक करो कि
नहीं, आपको फिर इंट डिजायर्ड प्रीफिक्स सम, वो आपका होगा 2 स्टार करंट एली प्लस 2 स्टार करंट एली प्लस करंट प्रीफिक्स सम। अच्छा ठीक है, अब चेक करो कि desired prefix sum exist or not. चेक करो कि desired prefix sum exists or not. If inner hash, रुक जाओ, अच्छा wait, हाँ inner hash आपका होगा, अच्छा तो outer hash है आपका your outer hash is this, ये आपका outer hash है, outer hash dot find desired prefix sum। desired prefix sum अगर outer hash current ele डॉट एंड, तो आप फिर आंसर ठीक है। डिजायर्ड प्रीफिक्स सम, अच्छा दिस शुड बी अ लॉन्ग एंड आंसर भी लॉन्ग है, ओके। तो आंसर प्लस इक्वल्स टू 1 LL स्टार, ये तो आपका इनर हैश हो जाएगा, आउटर हैश करंट एली, ये आपका इनर हैश हो जाएगा। इनर हैश में भी आपको डिजायर्ड प्रीफिक्स सम की वैल्यू करनी है। ये आपका इनर हैश है, इनर हैश से वो निकाल लिया। हाँ ठीक है, अगर ये तो है, चलो मिला ठीक है, अगर नहीं मिला तो आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आउटर हैश की की में अब आप क्या करोगे, करंट एली को की बना के करंट प्रीफिक्स सम को की बना के ऐड फ्रीक्वेंसी, नहीं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। अच्छा तो आउटर हैश इसमें आपने करंट एली, ये आपका करंट एली हो गया, अब इसके अंदर वाली की होगी करंट प्रीफिक्स सम, ठीक है, प्रीफिक्स सम, इसको प्लस प्लस कर देना, दैट इज इट। और अब अपना प्रीफिक्स सम प्लस इक्वल्स टू करंट एली और अपना आई प्लस प्लस, और this should give you the answer, at least I hope. Okay, there's some error. Okay, so we are safe. Yes. You know what I did yesterday? I okay, leave it. Hi bro, hi my good. You should remember this test case. Answer is -3. I spent almost, then I chat GPT and suggest me a if line. Oh yes, that 0 0 test case. Yeah, that's an edge case we have to remember. Okay, we are safe, I guess. At least till now. My account is safe. I saw that. And that guy, I think he deleted his post. Why am I getting a 0 here? This case is working. Why am I getting a 0 here? 0 equals to 2. अब इसमें क्या होगा? For 9339, let's just go with this case.
9 339 3339। अब वो इधर आएगा, एट दिस पॉइंट प्रीफिक्स सम होगा 0, तो आपके मैप में वो 9 के अंदर स्टोर करेगा। 9 के अंदर भी एक मैप होगा, राइट? 9 के अंदर भी वो मैप होगा। वो कहेगा 9 के अंदर मुझे एक 0 प्रीफिक्स सम के साथ, ये आपका प्रीफिक्स सम होगा विद योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? 0 प्रीफिक्स सम के साथ एक फ्रीक्वेंसी वाला मिला, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। अब वो 3 पे आएगा, तब उसका प्रीफिक्स सम होगा 9, तो वो 3 के लिए कहेगा he found with a prefix sum 9 and a frequency as 1। फिर 3 पे आएगा, तब वो कहेगा उसे मिला एक प्रीफिक्स सम 9312 और 9312 एंड फ्रीक्वेंसी 1, ओके। और वो चेक करेगा, नहीं, what am I even doing? इधर 3 पे आया, तब वो ये प्रीफिक्स सम होगा, वो देखेगा कोई ऐसा 3 मिला है जो आपका CLE star 2, what was the condition? Current element star 2 plus prefix sum, this should be equal to a desired prefix sum, okay, makes sense। you should take, लिखने के लिए क्या यूज करते हो? आई एम, भाई माउस से ही लिख रहा हूँ एक्सकैली ड्रॉ पे। you should take prefix sum minus current element star 2 as desired, but you took plus instead of minus। I took plus, you're talking about this, how did I come to this? Okay, let me review that। मैं यहाँ पर आऊँगा, what are you doing? यहाँ पर आऊँगा, इस 9 पर आऊँगा, तो मेरे पास ये सारे के प्रीफिक्स सम होंगे, ठीक है, और इस 9 के लिए मेरे पास ये होगा प्रीफिक्स सम 0। सो मैं कह रहा हूँ इस 9 पे आई एम चेकिंग अ 9 विद अ प्रीफिक्स सम सच दैट की करंट प्रीफिक्स सम माइनस पुराना प्रीफिक्स सम अगर मैं करूँ तो मेरे को ये तो 9 के बराबर हुई, ये तो करंट एलिमेंट के बराबर हुई, ये CLE के बराबर हुई, प्लस एक और ये CLE होगा ना, हाँ, तो 2 स्टार CLE। सो दिस वुड देन देयर गो एंड बिकम प्लस पुराना प्रीफिक्स सम, तो पुराना प्रीफिक्स सम इक्वल्स टू, ओ वेट, गेट दिस अवे। तो हमें निकालना है पुराना प्रीफिक्स सम, चेक करना है ना, तो पुराना प्रीफिक्स सम शुड बी प्रीफिक्स सम माइनस 2 CLE। पुराना प्रीफिक्स सम अपना डिजायर्ड सम है ना, पुराना प्रीफिक्स सम, तो प्रीफिक्स सम माइनस 2 CLE मैंने क्या ले रखा है, प्रीफिक्स सम, ओ ओके, या ब्रो हेल्प मी आउट, करेक्ट, माइनस 2 CLE। come on, I'm getting wrong here। अब that case is working, but this minus 4 0 0 minus 8 minus 4, this isn't working। maybe because the output is 2, how are we getting 2? How are we getting 2 here? Wait, how are we getting 2 here? मैचिंग तो सिर्फ एक करेक्टर है, 0,0, अच्छा, ओके,
let me debug this. Cout adding when cle current le. So see, it's adding a case of 0 0. Why though? That's the thing. It's adding when 3 and 9. It's adding 1 to it's adding. अच्छा, इस केस को भी काउंट कर रहा है. इस केस को काउंट क्यों करेगा? वो देखेगा अगर 0 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है. ओ, 0 के केस में you are right, but edges have to be considered for double or more zeros. Yeah, 0 पे my logic is breaking. That's why you're getting 2. क्या छेड़ा? Nothing bro. 0 0 पे तो इसमें क्या लॉजिक में गलती है क्या? -4 -4 0 0 -8 -4 -4 -4 0 0. अबे -4 -4 0 0 -8 0 0 -8 -4 0 -8 -4 -4 4 0 0. Bro, I can't copy, and I'm talking about solving a Leetcode question. Okay, this is the thing. इसमें अब वो इस 0 के लिए it will search a 0 with the desired prefix sum. हमने क्या लिखाया था? Desired prefix sum was where is it? Current prefix sum -2 star current element. Desired sum equals to current prefix sum -2 CLE, right? current element ये आपका होगा desired prefix sum. So desired prefix sum would be current prefix sum -2. अच्छा, तो इसका prefix sum would be equal to इसका prefix sum, and this term would be equal to 0. तो इसीलिए how can we solve this? इसमें desired prefix sum तो बन रहा है, और this should work in a case अगर ऐसा अपना होता है 0, तो तब तो this should work. Do we just simply exclude all the cases of 0? I think so. भैया 2 + 2 कितना होता है? 4. What happened? Take if condition to check. 2 + 2 कितना होता है? What are you even asking, bro? Bro, you got placement or not? Bhai, it's complicated. I actually have an offer, but that is on hold, so I am again in this placement scene. Whenever you get 0 0, then take an if condition to check, then remove -1 from result. So for 0 0, we just remove -1 from result. Why should we do that? Okay. Oh, that I feel like I understand what he's saying. 0 0 में क्या होगा? अब जैसे there are multiple zeros, है ना? There are multiple zeros, तो मान लो इस 0 के लिए वो सारे zeros को काउंट कर लेगा, लेकिन हमें ये वाला काउंट नहीं करवाना ना, ये वाला काउंट नहीं करवाना. इस 0 के लिए भी वो इस 0 को काउंट कर लेगा, लेकिन हमें इसे काउंट नहीं करवाना. दैट्स व्हाई इज आस्किंग मी टू डू -1. इस 0 के लिए भी वो ये काउंट कर लेगा, ये काउंट कर लेगा, ये काउंट कर लेगा, ये भी कर लेगा, लेकिन हमें ये वाला काउंट नहीं करवाना.
because it's just adjacent. Oh, that's why he's saying, okay, if current LE equal to 0, answer minus minus. Bhai, this was smart. This was smart. I in minus 1. I in my. Bro, can you please help me for placement? How can I apply? Bhai, what do you mean I'm not a HR or recruiter? How? Bhai, just, I think, keep doing lead code projects bana lo. That's all, bro. I'm no expert. Submit karu. Let's try on these test cases. Yeah, it's working. Cool. So minus 4 bhi it's working. हाँ, so this should work now. अबे भाई, what? What's the issue here now? Oh, ओके 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 ओके, अब इस जीरो के लिए भी उसे ये और ये मिलेंगे, लेकिन मैं तब भी माइनस वन करवा रहा हूँ, जबकि इसमें कुछ माइनस वन होना नहीं चाहिए. ओके, दैट्स द केस. इफ करंट वैल्यू इक्वल टू 0 एंड एरर आई इक्वल्स टू एरर आई माइनस वन, तभी आप आंसर माइनस माइनस करवाओ. तभी आप आंसर माइनस माइनस करवाओ कि कंसेक्यूटिव एलिमेंट 0 होने चाहिए. आई गेट इट. भाई बहुत ज्यादा एज केसेस है भाई. हाउ कुड एनीवन सॉल्व दिस इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट? अभी भी ओके. और इंट ओवरफ्लो हुआ है, दैट वी कैन हैंडल. 52 पे. व्हाट एम आई डूइंग? desired prefix. Okay, so we done. Where are you from? Bhai, I'm from Delhi. I'm from Delhi. Stable subarrays with boundary. Bhai, this was a very nice question. 745 by 752 gang. 745. Which was one? Which one was 745 by time limit exceeded gang. This was my attempt in the contest. Can't handle zeros. Can't handle zeros. Same. You got it. But spend over 20. That's why experience matter. I didn't understand, bro. You got it, but spend over 20 minutes. Matlab, do you want me to spend more time on a problem? I'm thinking to do one more question. आज का POTD क्या है? Number of laser beams in a bank. 86%. So I think we can try solving this. Anti-theft security devices are activated inside a bank. You're given a zero-indexed binary string error bank representing the floor plan of the bank, which is IMF. Bank I represents the ith row consisting of zeros. 1 means the cell is empty. Cell has a secret device. There is one laser beam between any two security devices if both conditions are met. Two devices are located at two different rows. Okay, for each row, there are no security devices in the
आए फिर ओके लेजर बीम्स आर इंडिपेंडेंट वन बीम डज नॉट। अच्छा मतलब कंसेक्यूटिव रोज में रिटर्न द नंबर ऑफ लेजर बीम्स। सो दिस इज पहले में 3 है, फिर 3 इंटू 2 हो जाएगी, फिर 2 इंटू 1 हो रहा है। अच्छा तो इसमें तो बस मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना, 3 है इसके अगला कुछ है नहीं, हाँ तो हो जाएगा। ठीक है मतलब दैट्स माय थॉट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड। एंड प्रीवियस प्रेव रख लो, पॉइंट I equals to 0, I less than int n equals to I less than n, I plus plus, int one count equals to one count निकालो, एक आंसर भी रख लो, for car C of your ARR I, if C equals to 1, one count plus plus। अगर one count आपका 0 है, one count 0 है तो you just continue, else your answer plus equals to one count star previous prev, और फिर आपका prev बन जाएगा one count। दैट इज इट। एक आंसर और रख लो, int आंसर इक्वल्स टू 0, रिटर्न आंसर। कर दूं सबमिट? इसकी 86% एक्सेप्टेंस रेट है, मतलब सिंपल लॉजिक है, दिस शुड वर्क। इसको वन काउंट ले रहा हूँ, अगर वन काउंट नहीं है तो यूर कंटिन्यूइंग एंड दिस शुड वर्क। डू यू चैट जीपीटी फॉर सिंटैक्स इश्यूज और डू यू वन बाय लाइन? You direct multiply the beam. I'm talking about for this edge. Oh, you spent 20 minutes. हाँ भाई, that edge case मेरे को तो यहाँ पे data explosion ने help कर दी थी, मेरे से भी वो logic नहीं समझा था। Do you chat GPT for any syntax issue? भाई bug के लिए I try to debug on my own. The best way कि आप see out कर देखो अलग अलग lines पे। Syntax के लिए तो of course अब every operator तो तुम्हें याद नहीं होगा ना, पर अगर macro define करना नहीं आता तो वो तो chat GPT से पूछ सकते हो। हाँ तो this was a simple question. Number of lasers in a beam. Honestly, this could be an easy one. Medium easy. That's what I'm saying. 3 to 1 and you multiply 3 2 and 3 1. Yeah, makes sense. Makes sense. Should I do some this? अब जल्दी जल्दी हो रहे तो मन कर रहा है कि कर लूँ एक दो और, वरना I have to work on my project. Elimination game. Why have I started this question? Starting from left to right, remove the first number and every other number afterward until you reach the end of the array. Repeat the previous step again, but this time from right to left. Remove the rightmost number and every other number. Keep repeating the steps again, alternating from left to right until 1 3 6 5 7 9 8 4 2। भाई यार ये तो ऑब्जर्वेशन का लग रहा है कुछ फालतू का। Number of zigzag arrays, or I have an important one too. Minimum remove to make. Which one should we do? Your task is to remove the minimum number of, this has to be a stack question, minimum number of parentheses in any position so that the resulting parenthesis string is valid.
minimum number makes me think like this could be, yeah. Bye bye bro. Okay, bye bro, you helped me a lot. Data explosion, bye bro. See, valid parenthesis is acha, we have to find the minimum number. Minimum number of parentheses. Minimum number of parentheses to remove, हमें ये पता है for every open there should be a close. तो अगर open ज़्यादा है तो you can remove open, अगर close ज़्यादा है तो आप close कम कर दो. अच्छा चलो ठीक है. In any position it can be written as A concatenated with B wherein B. Close, close, open, open. Bye bye bro. Bye bye. Okay, formally a parenthesis string is valid only and only if the empty string contains only lowercase characters, or it can be written as AB, A concatenated with B, where A and B invalid strings. It can be written as A, where A is a valid string. A को पुनो है, दो क्लोज है, तो उसने लास्ट वाला DE हटा दिया. Okay. For this, what we can do is we iterate one by one. राइट, इस पॉइंट पे देखेंगे ओपन और क्लोज का काउंटर बना के चलो. इस पॉइंट पे हमेशा ओपन शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू योर क्लोज. अगर क्लोज ज़्यादा हो गए तो ओपन कम. लेट्स सी, इस पॉइंट पे ओपन 1 है तो ओपन 1 हो जाएगा. इस पॉइंट पे ओपन 2 हो जाएगा. इस पॉइंट पे क्लोज 1 हो जाएगा तो ओपन आपका 1 रह जाएगा. इस पॉइंट पे भी ओपन 0 रह जाएगा. अब इस पॉइंट पे हम इसे मार्क कर देंगे, ठीक है. वील मार्क दिस की क्लोज. लेकिन वील हैव टू चेक, अगर वांट इसमें मिनिमम नंबर भी तो देखना है ना. तो मिनिमम नंबर के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर रिमूव ओपन्स और आइदर रिमूव क्लोज्ड. अब उसमें से चूज करना पड़ेगा. वी हैव टू ऑप्शंस फॉर मिनिमम रिमूवल. For minimum removal, we can either delete open, we can either delete closed, we can either delete open या फिर close. लेकिन हम delete ही तो कर सकते हैं ना. हाँ, और delete हम वही करेंगे जो extra होगा, of course. तो सबसे पहले find the extra ones between open and close. Find the extra ones between open and close, and that's it. That's it. Am I missing something, or is that it? So you just make a string copy equals to s, int open
यहाँ पर तो देयर वर एक्स्ट्रा ओपन, यहाँ पर तो देयर वर एक्स्ट्रा ओपन, नहीं नहीं, आई एम एक्चुअली मिसिंग, यहाँ पे दे आर इक्वल, बट ये क्लोज क्लोज तो डिलीट होंगे, ओपन ओपन, let's take two cases with more open and more closed. Let's take two cases. Find the extra ones between open and close. Let's say we have a case like two pointer seems to be working too for this puzzle judging on the first test case, so using stack is not necessary. हाँ भाई, in this stack अभी तक तो I don't think so we require stack, it doesn't look like it, but क्या पता we are going in the wrong direction. How much time did it took you to learn CPP so that you can solve Leetcode? भाई CPP में it's just that you need to get familiar with syntax और data structure, जिससे मतलब क्वेश्चन सॉल्व होगा. Probably like 1-2 weeks just to get familiar. ये नहीं कि to become expert. I'm not any expert. So 2 pointer seems to be working. अब इसमें क्या होगा, ये तो हमें हटाना ही पड़ेगा ना. In this case, so that the resulting parenthesis string is valid and return any valid string. If the empty string contains only lowercase characters, or it can be written as AB, A concatenated with B, where AB are valid strings. That is the empty string. Formally, it is an empty string containing only lowercase, can be written as AB, A concatenated with B, where AB are valid strings. Or what is the definition? Why is it so fucking confusing? Leetcode. इसमें अब इन्होंने करा क्या, इन्होंने ये वाला हटा दिया, चलो ठीक है, मेक सेंस. एक्सप्लेनेशन, हाँ, ओ अच्छा, वो कह रहे हैं ये वाला भी हटा सकते हो आप, ये वाला भी हटा सकते हो, या फिर आप ये वाला भी हटा सकते हो. Leetcode would also be accepted. Okay, okay. I think the first step to make our input simple, पीछे से एकदम स्टार्टिंग से इटरेट करो और जो भी क्लोज्ड दिख रहे हैं, किसी भी ओपन से पहले जो भी क्लोज्ड दिख रहे हैं उन सबको हटा दो, और एंड से इटरेट करो और किसी भी क्लोज्ड के बाद जो भी ओपन दिख रहे हैं उन्हें हटा दो. आई डोंट नो. S equals to ABCD, जैसे यहाँ पे क्लोज दिख रहा है विदाउट एनी ओपन. So the point is every open should have a closed, right? Every open should have a closed. Okay, every open should have a closed, that's the simple logic. Every open should have a closed. Valid बनाने के लिए every open should have a closed, that's very obvious. And if any two consecutive are this,
तो remove it. Bro, where am I even stuck at? Which year? Bro, do you manage time solving DSA? How do you manage? Bhai, I am very weak in development. That's why I plan to do this as a project, like focusing on my project. लेकिन अब मैं यहाँ DSA कर रहा हूँ. पता नहीं है. Which year? I am in my 4th year. What we can see, अगर कोई closed से पहले open आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक आई हैव अ सॉल्यूशन. 2 मैप बना लो जो इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं. 2 मैप बना लो, मैप 1 और मैप 2. मैप 1 और मैप 2. आई थिंक वी डोंट नीड अ मैप 2. हमें सिर्फ ओपन के इंडेक्स स्टोर करने पड़ेंगे, ओपन के. ठीक है ना? अब आप क्या करो, आप इटरेट करो. इटरेट करो. पहला केस है कि आपका इसमें आप स्टोर क्या करोगे? यू विल स्टोर इंडेक्स ऑफ योर ओपन ब्रैकेट्स. ठीक है. अब आप क्या करो? इटरेट करो. इटरेट करो. नाउ एज सून एज लेट्स से यू फाइंड ओपन ब्रैकेट, तो आप उसका सीधा इंडेक्स स्टोर कर दो. क्लियर. अगर आपको क्लोज ब्रैकेट मिला, अब आप देखोगे अगर आपका ओपन ब्रैकेट ओपन, इसमें डू यू थिंक वी शुड हैव अ मैप और वी कैन एक्चुअली यूज अ हीप ताकि हम पॉप कर सकें. आई थिंक वी कैन एक्चुअली यूज अ हीप हेयर, मैप या हीप में. एनीवेज, जो भी होगा, अगर आपको क्लोज मिला, अगर आप देखोगे अगर आपका ओपन खाली है तो ये क्लोज को आपको हटाना पड़ेगा. अगर ओपन खाली नहीं है तो ये क्लोज्ड इज वैलिड. और आप ये जो ओपन में, मतलब ओपन खाली है मतलब मैप, ये जो मैप में आप एक पॉप कर दोगे कि एक ओपन तो चला गया भैया, एक ओपन तो चला गया. एंड यू कीप गोइंग. और एंड में सारे ओपन चले जाने चाहिए. अगर कोई भी ओपन बचा है तो उसके इंडेक्स इसमें बचे होंगे और वो हम डिलीट कर सकते हैं. वो हम डिलीट कर सकते हैं कि नहीं? वी शुड हैव द ग्रेटेस्ट एलिमेंट. एक हीप बना लेंगे, मैक्स हीप प्रायोरिटी क्यू. उसके अंदर ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्टोर करते जाएंगे. लेट्स ट्राई. आई एम completely beginner in coding. I only know basic stuff like loop, array, etc. Should I start DSA? Of course, bro. If you start DSA, then only you'll get better at DSA. That's the whole point of practicing. Start, bro. Start as early as you can. I wish I started early. So we can, priority queue is a min heap or max heap? In CPP, how to make a max heap? Make heap. No, what is a priority queue? Priority queue. Priority queue. जैसे this is a syntactical thing that I'm forgetting. That's why I'm asking. हाँ, use a priority queue. Exactly, वो max heap ही होता है. तो okay. Priority queue जिसमें int store करेंगे. Open indexes. Open indexes for car. Copy तो आपने बना ही लिया है. For car C of copy. अब आपका पहला केस है if C equals to मान लो आपका closed आ गया. If C equals to open आया, let's keep it simple. C equals to open आया तो we simply अच्छा इंडेक्स है ना यार. int I equals to 0, I less than copy the
length I plus plus. What else do we need? Nothing. car c equals to copy और I, right? अगर आपका open है तो आप इसमें open indexes dot insert right, no, dot push open indexes dot push your current index. That's it. आपको open में तो कुछ करना ही नहीं है. अगर आपका closed है, if c equals to closed, अब इसमें cases है. If you can say if open indexes dot empty, तो आप क्या करोगे, आप मार्क कर दोगे कि ये वाला हमें हटाना है. कॉपी ऑफ आई, इसको कुछ भी बना दो, मेक इट एट द रेट, ठीक है ना. ओपन इंडेक्सेस एम्प्टी है तो एल्स आप क्या करो, ओपन इंडेक्स से ओपन इंडेक्सेस डॉट पॉप, राइट. पॉप होता है ना, पुश पॉप, राइट. ओपन इंडेक्सेस डॉट पॉप, ठीक है. आफ्टर दिस इज योर और ऑटो IT ऑफ जितने भी ओपन इंडेक्सेस बचे हैं वो भी हटेंगे. फिर ओपन इंडेक्सेस कॉपी ऑफ IT, इनको भी आप एट द रेट बना दो, राइट. ओके, अब नाउ जस्ट गो स्ट्रिंग आंसर फॉर car c of your, what is this, copy. If c is not equal to at the rate answer plus equals to c, return answer. What's happening? Invalid range expressions. अच्छा, while open indexes dot empty, जब तक empty नहीं है, index equals to open indexes dot top, copy of idx equals to at the rate, and then you do open indexes dot pop. This seems correct. Ask first, what is your goal? Why do you think you need the programming skill? Okay, you need to have the boilerplate code for all most used DS, like priority queue in a folder somewhere if you plan to participate in contest in Leetcode. I have seen all those like people who are scoring really good in contests. They always use like a fucking big ass like 200 lines of templates before any solution. But I actually never needed it. Could you like make me understand what's the help of it? How does it help? Let's submit it. This looks correct. TLE आ सकता है तो आ सकता है, but this looks correct. Yeah, but very inefficient though. How did the guys in vector int to be removed? So it's the same logic as me. अच्छा, हीप की जरूरत भी क्या है, एक वेक्टर में ही स्टोर कर सकते थे ना. ओके, सो माय लॉजिक इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वेक्टर में स्टोर करके जा रहे हैं टू बी रिमूव्ड. मैंने हीप में कर लिया. ओके, मेक सेंस. फाइनली सॉल्व्ड अ स्टैक मीडियम क्वेश्चन विदाउट हेल्प. Is this a stack question? It did not need a stack.
A, B, C, D. Makes sense. So I've done this. Should I do one more? Okay, I should not. It's enough lead code for today. I need to focus on development. Sorry guys, no more lead code now. File matching. Bi-weekly on. What was my rank here? 3,826. Makes sense. Okay. I think you got left without explaining me the need of a boilerplate code. We don't need Xcali. Okay. ये जो function है mix sense bro, I saved a voice note in this. Where is the voice note? I remember I saved a voice note. What the hell? Where is the voice note? I actually did it on stream. Okay, here it is. It's super admin. Makes sense. Is my computer? Let me add earphones. Pass it to the global error handler using next error or throw new error. ये synchronous function में होगा. In synchronous function. हाँ, synchronous function में you can throw new error. लेकिन async function में simply throw new error won't work. Try catch block use करो और catch block में next error करो या handle it. Okay.
Let's go try catch. Expected to ठीक है. That's why synchronous don't need you to try catch. Express already does it. Why sync roots break this? I need special handling. Even though it looks the same. ठीक है. Try catch function. Wrapper function to replace catch. ठीक है, ट्राई करा, वहां से थ्रो करके कैच कर लो. I've always found this way simpler than writing a wrapper function. Catch async के अंदर वो function दे दिया. Okay. Makes sense. Why is this? If we pop out, why? How can I pop out chat? Bro, finally I solved 2125 number of laser streams. Oh, today's topic, problem of the day. Good, bhai, good. That's a good problem. Observation based problem थी भाई वो. Nice. Good work. Parth, bro, what all topics have you done in DSA? What all topics have you done in DSA? And for the project that I'm building, I'm actually following a tutorial. मेरे को development ज़्यादा नहीं आती, so that's why I have to follow a tutorial. I'm learning. You see, I even left a comment. Aratai. यहाँ पर नाम यहाँ पर मैं Do we have any also nested root में slash आता है, उसके अंदर के roots में slash नहीं आता. And also parent root का element element is a layout जिसके अंदर का एक outlet होता है. Also parent root का element is a layout जिसके अंदर एक outlet होता है. अच्छा, okay. Layout always gets printed and उसके outlet में जो print होता है that is dependent on child roots. Okay. Index element is the default print for outlet when we simply render layout. Update, change back to normal. Simple one-line return इसमें final takeaway is this the core idea when you write an arrow function. The symbol after the arrow determine what happens with the function. Where's my phone? Might be outside. Which year? Array, string, linked list, learning. Hi, if you have only done that and you could solve that nested map question, bro, you're really good at problem solving then. Linked list learning. I hate linked list. Linked list is trash. Shruti, KCS. I'm in my 4th year.
Okay, what is this guy asking me to do? And ठीक है, तो ये वो प्रॉम्प्ट AI स्टूडियो एंड मुझे यहाँ पर गेट API पर क्लिक करना होगा, ठीक है, तो गेट API की, ठीक है, एंड तो यहाँ पर मैंने कुछ API यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पर नया API क्रिएट करूँगा। सिंपली उसके लिए मुझे यहाँ पर क्रिएट API की पर यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर हम कोई सा भी यहाँ पर नाम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं या कोई भी आप यहाँ क्रिएट API एंड जिमनी API जो है यही मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड क्रिएट API। Wait, he selected a project or he right? क्रिएट API की पर यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर हम कोई सा भी यहाँ पर नाम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं या कोई भी आप यहाँ पर नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पर जिमनी API जो है यही मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड क्रिएट API, ठीक है, तो मैं बेसिकली इसको कॉपी करूँगा एंड अपना VS कोड में आऊँगा। आप चाहे तो वहाँ पर अपना API लिख भी सकते हैं, कोई नहीं, तो मुझे यहाँ पर Wait, why is he showing his API key? Isn't that like something to keep private? Can I copy his key and work with it? Let me try my own key. You know what? Let me use a different account for this. Let's go with this. Get API key. Can't find your API key. Create API key. Name your key. Create project. Name your key. Sign up. Gemini API. If we create a project, create your project. What's the name of this bullshit application that I'm it's Synapse. Okay. Are you supposed to hide your API key, right? He'll probably delete this API key right after recording the video. Okay. And I should hide my screen when I'm like copying my API key, right? I'm sorry, I'm really bad at development. I think I should hide my screen. Just a minute. Let me create. Okay, I have created the key. Let me paste it here. Gemini API. Okay, it's done. Yeah, the key is done. Bro, can you please increase your mic volume? Bhai, see, the thing is, I don't have a professional mic or anything. All I can do is speak louder. Only if there's like a, let's see, if there's like a filter, noise suppression. If I remove noise suppression, you will hear the fan noise. Gain. Gain. Let's add it. What does gain do? I'm hoping it does. Close. Is my voice better now? Let me check. It's better now. Let me check. It is.
Hello, bro. Do you have LinkedIn or Twitter? Yes, I have my LinkedIn. Take my LinkedIn. I should probably add LinkedIn to my channel description. I will. This is Parth, bro. You know what? I feel like I should. So, which year you're in? This works. Yes. Okay. Thank you. I'm in my fourth year. Your voice is louder. And I hope you guys are not hearing the fan noise in the background. I feel like I should try his API key once. Let's not waste time. जो हमको एपीआई की मिली। अगर प्रॉम्प्ट बनाने में यहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे यहाँ पर एपीआई मैं यहाँ पर चेंज भी आप करके सकते हैं, ठीक है? क्योंकि प्रॉम्प्ट में फिर दिक्कत वहीं पर आएगा कि आपके एपीआई पर ही दिक्कत आएगा। क्रोम में आता हूँ और इसको हटाने के बाद मुझे डॉक्यूमेंट में आता हूँ, जो जिमनी एपीआई का डॉक्यूमेंट आता हूँ और ओपन यहाँ एपीआई कम्युनिटी पर यहाँ करता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे पास में ओपन एआई यहाँ पर दिया गया है, तो सिंपली मुझे किसी चीज़ को यहाँ पर एआई जो है इसको यहाँ पर रखना होगा। तो मैं इनको दोनों Why he's writing JavaScript code? Why को is he सेलेक्ट कर copying लिया। Python? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पर इंस्टॉल भी करना होगा ओपन एआई को। तो सबसे पहले मैं ओपन एआई को इंस्टॉल कर लेता हूँ। सिंपली मैं ऊपर जाऊँगा, इसको कंट्रोल सी से करूँगा, उसके बाद थैंक यू इंस्टॉल ओपन एआई, ठीक है? तो इंस्टॉल इसको And a server, okay. एंड सर्वर रन करता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन सबको कॉपी करना होगा एंड ब्राउज़र बनाते हैं। तो हमारे पास में एआई कंट्रोल है, वहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ। Should he not copy the JavaScript version? He copied the Python version. What's the URL? AI-google.dev. Gemini API. No. Okay. I'll need now. Here it is. Where to go from here? API quick start. OpenAI compatibility. Right. He should have copied this. He copied the Python code. Acha, so this is your, and this goes into our, I hope I do not have, this goes into our AI controller. API key equals to Gemini API key. I have actually saved it as Gemini API in my .env, so let me change that. Did Leetcode ban you or contact you? Bro, send me your Leetcode ID. Yes, I see. Yesterday, no, Leetcode did not contact me or anything. Neither did, I don't think so. When that guy like made a post on me, I initially tried to comment on that post, फिर मुझे लगा कोई फायदा नहीं है, so I did not. उसके बाद no, Leetcode did not contact me or anything. Let me check once again. No. हाँ नहीं तो there has been no mail from Leetcode. Hi Vijendra, कैसे हो भाई? And I don't think so यार, everybody does it. I don't think so there is going to be any issues. हुआ भी तो अब who cares? I don't think so I'll be stopping anytime soon to stream contest. How was it yesterday? Bam, your account. Okay, let's stop this. Let's get in here. एंड ब्राउज़र बनाते हैं। तो हमारे पास में एआई कंट्रोल है, वहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ।
तो यहाँ पर होगा import open AI, यहाँ पर open line.js, बट मुझे यहाँ पर open AI से निकालना है। तो ओके, तो मुझे यहाँ पर क्लाइंट इसलिए यहाँ पर दिखाना है कि मैं यहाँ पर कॉन्स को गलत लिखा, सो कॉन्स AI he करके he बनाना होगा। could तो have AI just इक्वल टू हो जाएगा copied न्यू, अब मैं ओपन AI को, ठीक है। तो यहाँ पर constant OpenAI equals new OpenAI. हमारा Okay, हो गया, यहाँ पर मुझे देना होगा प्रोसेस डॉट yeah, so it's process dot env dot Gemini API, right? Gemini API or Gemini API. How do you write it? TNB डॉट, मैं तो डॉट TNB में Gemini ये जो API. जेमिनी Yeah. API यहाँ पर लिखा हूँ, तो मैं यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब चाहे तो API की जगह पर डायरेक्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट करना कोई अच्छा प्रैक्टिस नहीं होता है, इसलिए आपको यहीं पर जाके पेस्ट करना होगा, ठीक है। मतलब एक No, never do direct. You आपको don't do डॉट that. TNB फाइल बना लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली ये प्रैक्टिस यहाँ, ओके। तो ये होने के बाद अब जो हमें इस ओपन AI को इंटीग्रेट भी करना है, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मॉडल हमें यहाँ बताना है 2.5 प्लस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सिंपली मुझे यहाँ पर रोल को यहाँ पर डिफाइन भी यहाँ पर करना होगा, तो बस इसी सब मुझे यहाँ पर यूज करना होगा। इन सबको कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो मेरे पास में रिस्पॉन्स करके हैं मैं कॉपी करता हूँ, आगे जो मुझे यहाँ पर Okay. Bro, I made a project from Hercules project list. Would you like to check it out? I think you like it. Sure, bro, send it. See, the thing is, I'm really bad at development, so I might not be able to fully understand it. But send it if you like it. I am a noob developer. कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली अवेट यहाँ पर But you know, I actually worked on a project. Since you guys are talking about project, let me show one if I have that in here. So, it is a deployed project. Okay, bro, send it. npm run dev. Okay, so this is the project. I've also mentioned this in my resume, but my face is covering it. Okay, yeah, this is the project that I've even mentioned in my resume, although I need to still polish it a lot. And this is a DSA based project. We can visualize as of now Dijkstra or A star from it, right? And on top of that, besides focusing on implementing these algorithm, I'm also like trying to perfect this algorithm to create a maze. Right, let me change the CSS and this is visualize. So basically what it does is it finds the shortest path from your start to the end. It's a React based project. Clear path. You see how A star is so much superior than the Dijkstra. Now if I were to use Dijkstra on this same maze, it would take like an year or something. Yeah, so this is a simple project. Wow, great visuals. Thank you. Thank you, bro.
भाई मुझे भी सिखा दो यार भाई, डेवलपमेंट तो मुझे भी नहीं आती, आई एम लर्निंग माई सेल्फ, मुझे भी नहीं आती। लेट मी कम बैक इन अ सेकेंड। Okay, yes. So my main aim for today's stream is to actually get shit done in this project I'm working. दे देता हूँ और तो SQL, ठीक है, और इस SQL को मुझे इंपोर्ट यहाँ पर करना होगा ऊपर में, तो सिंपली मैं कराता हूँ कोड वाले सेक्शन में, और यहाँ पर मुझे इंपोर्ट SQL फ्रॉम, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्फिग, जो फाइल है कॉन्फिग से मैं db डॉट एक्चुअल का पूरा नाम यहाँ पर दीजिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर बनाए हैं db डॉट js करके, ठीक है, तो तभी अच्छे से ये फाइल रीड करता है, तो कभी What did we write in DB? Okay, अच्छा, we are using Neon. कभी वो रीड नहीं कर पाता है फाइल को, सो अवेट SQL इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, तो इंसर्ट पास कर दूंगा यूजर का जो आईडी है, अवेट SQL रिस्पांस टाइप को मैं यहाँ पर कर Oh, दूँ वैल्यू और आके यहाँ पर मैं, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर so he's adding into the database about the creation. Okay. एक इफ कंडीशन ऐड होगा, सो यहाँ पर प्लान जो है अगर मैं तो और भी नूबू, मुझे तो JS, HTML, CSS भी नहीं आती। लिंक इज नॉट विजिबल इन कमेंट सेक्शन, आई डू नॉट नो व्हाई। अच्छा हाँ, रिंकू यू कैन नॉट सेंड लिंक्स इन यूट्यूब ही हटा देता है। सेंड मी लिंक, ब्रोकन लिंक भेज दो, जैसे youtube.com है ना, तो इसमें डॉट कॉम और HTTP हटा के ऐसे भेज दो, आई ऐड दैट माई सेल्फ। सेंड मी अ ब्रोकन लिंक और email me the link at my mail, you know, not even this, government 04x, email me at this। मैं तो और भी नहीं हूँ, मुझे तो JS, HTML, CSS भी नहीं आती भाई, जस्ट आई मीन मुझे भी ज़्यादा नहीं आती, जस्ट गेट गोइंग। आई गेस एक दो प्रोजेक्ट्स ही बनाऊँ, मैं तो प्रोजेक्ट से ही सीखता हूँ, ट्यूटोरियल्स नहीं देखे जाते मुझसे। अगर वो नॉट इक्वल टू यूज़र आईडी, अच्छा उसने यूज़र आईडी निकाली, राइट। प्रीमियम है, प्लान इज नॉट इक्वल टू प्रीमियम, प्रीमियम, तो मुझे तो यहाँ फ्री पर अवेट यूजेज बढ़ा दो। डॉट जो हमारा हो जाएगा कलेक्ट लाइन, तो कलेक्ट लाइन डॉट यूजर्स, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपडेट यूजर मेटा डाटा, और इसके अंदर मैं यहाँ पर पास करूँगा यूजर आईडी को एंड फ्री यूजेज बढ़ा सो देगा ना। प्राइवेट मेटा डाटा, एंड यहाँ पर करूँगा फ्री यूजेज, हम्म, और यहाँ पर करूँगा फ्री यूजेज प्लस वन, मतलब वो फ्री यूजेज में जितना उसका फ्री यूज होगा उसमें यहाँ पर प्लस वन होते रहेगा, कि उसके मतलब बेसिकली वहाँ पर वो प्लस होगा तो उसका 10 जो क्रेडिट है वो घट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसमें रिस्पॉन्स पास कर, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसके अंदर मुझे सक्सेस को मुझे यहाँ पर फॉल्स करना है, सक्सेस फॉल्स नहीं, अगर मेरे पास में यहाँ पर फॉल्स, व्हाई इज सक्सेसफुल। रेडी हो जाता है तो मुझे यहाँ पर ट्रू पास करना होगा, ट्रू एंड हम्म, कंटेंट में पास करें, और अगर एरर आता है तब मैं यहाँ पर करूँगा ओके, सो व्हाट ही इज डूइंग इज, यू गेट दिस आउट फ्रॉम हियर। अगर आपका प्लान ही प्रीमियम नहीं है और फ्री यूजेज इज लेस देन इक्वल टू 10, हाँ तो देन वेट,
I can't understand is free usage logic. हाँ, greater than equal to, it's greater than equal to, yeah, that's what I'm confused about. अगर free usage 10 से ज़्यादा है तो you return तो res dot json res dot json success आपका false message. I mean, I know I should use a proper global error handler, but अभी ऐसे ही कर लेता हूँ. Free usage limit reached. Is it even visible? What am I typing? Yep. Free usage limit reached. अगर आपका वो है, what am I doing? This is not C++. ठीक है, फिर you try to get the response. Okay, you try to get the response. जिसमें आपका content, so we are taking out the prompt right from the body. हाँ, content would be your prompt. I even had a doubt. Content आप prompt से निकाल रहे हो. What is this for? अच्छा, कंटेंट आप प्रॉम्प्ट से निकाल रहे हो. अब क्या करोगे आप? अगर प्लान प्रीमियम नहीं है, प्लान इज नॉट इक्वल टू प्रीमियम. हाँ, प्लान प्रीमियम नहीं है तो ही आप फ्री यूजेज बढ़ाओगे. तो अच्छा, एक बार ये एसक्यूएल में भी ऐड करना है. एसक्यूएल डीबी में भी ऐड करो. एंड दिस इज एसिंक्रोनस फंक्शन, राइट? एसक्यूएल डेटाबेस में भी ऐड करो. See, again, to make it better, we could use a catch async function. लेकिन ट्यूटोरियल में that guy is not doing. I think I will have to do it on my own. अगर प्लान प्रीमियम नहीं है तो await clerk client dot users dot update metadata, update user metadata, user private, something like private metadata, right? Private. How do we do it? Not.js user update क्लर्क क्लाइंट यूजर अपडेट यूजर मेटा डेटा यूजर आईडी दे दी और अच्छा तो ठीक है, अपडेट यूजर मेटा डेटा यूजर आईडी दे दी और जिसके अंदर वी गिव अ प्राइवेट मेटा डेटा फ्री यूजेज equals to free usage plus 1. This is what he's done, right? Private metadata, free usage, user ID, private meta. हाँ, makes sense. I sent you the link. Okay, you sent me the link. Let me see. Not this one. Welcome to my multiplayer virtual world. Step into a living multiplayer virtual world where you can explore, interact, and whether you're here to meet friends. Okay, I'll have to sign in. Okay, let me do it. Acha, I think I've seen this video. जिसमें he was talking about a project like this. Oh yeah, I've seen this video. Bhai, this already looks so.
This already looks so good. The space has been created. Okay. Wow. Saving will kick any players that are online. Special tiles. Let me try adding this. Damn, bro. This looks so impressive. Okay, let me just create the room. Acha, we have to create it on our own. Okay, okay, okay. No tiles. What is this? Okay, let me just save. What am I even doing? I'm creating on my own. Delete, delete this, delete this. Okay, save. We have saved this. I sent you the link. Okay, now what? Okay, okay. Now let's get out from here. Right, get in this, join. You can actually sit on it. Bhai sahab. This is so damn impressive, bro. Can I go out from here? Okay, this is the well. Back to home. You can share link and other can join, bro. This is so good. Like, how long did it take you to make this from the very start? Kitna time laga hai? It has to be at least a couple of months. Wow. Why सिखा दो रिंकू मीना? ये तो बहुत बढ़िया है, bro. This is so good. Yeah, bro. Please give me tips, bro. Please give 3 months. It sounds like it. Please give me tips, bro. What's my code forces rating, bro? I have done 100 questions on code forces, but never gave any contest on code forces. 3 months. Rinku, Rinku bhai, like, yeah, give us advice. Like, I am completely zero in development. I need your guidance. This is so good. ये तो पूरा ही भाई end to end project है. All you need is a custom domain. Bhai, this is so cool, bro. If you want, you can share your Rinku Singh. No, why am I saying Rinku Singh? Rinku Meena, can you share your GitHub? Share your GitHub, bro. In JS, if I am trying to destructure a request, what's correct? Constant user equals to request.body or body. Acha, it's not a function, okay. That's why we don't have to use a. I'm making a stupid error here. This auth function है. Auth भी शायद ही function है. What's the error now? Free user equals to. Did you mean to use a? Let me see that. A minute. Auth तो function है ना. Auth is a function जो clerk middleware provide करता है, right? And what about the dot auth that is provided by
after using clerk middleware. ओके, तो यहाँ भी मैं गलती कर रहा था। वाह, पूरे में गलत कर रहा था। ये भी ये ऐसे आएगा सिर्फ request डॉट auth। अच्छा, when do you use dot when you're calling a function, right? हाँ, of course, like if you try it, it's not a function because that body object है, हाँ, it's an object. Request dot get or request dot json. Result dot json is a function, so you do use. Okay. Yeah, Rinku bro, like email me or GitHub bro. I'll follow you. Free usage, अच्छा, right. Free usage +1. अगर प्लान प्रीमियम नहीं है तो आप फ्री यूजेज बढ़ा दो, एसक्यूएल में ऐड करना है। और वैसे आपको रेस्ट डॉट, इसमें शुडंट में, अच्छा ट्राई कैच तो कर ही रहे हैं, कोई भी एरर आया तो हाँ। रेस्ट डॉट जेसन, what's the status code for a successful request? Status code for a successful request 401, right? 200 is okay. 201, request succeeded and return data. We can use 200 status dot json. In the json we can give content as response, right? Error आया तो res dot status and for just tell me most commonly used status codes. I should know. Success, created, accepted, bad request, unauthorized, forbidden, not found, conflict, too many requests. Error की क्या होगी? Let's say error हो गया, not modified, conflict. Client error, server error. Let's say I am calling OpenAI API for a response. Let's just forget about it. Res dot, let's open it. If there's a error from that side, what to return as response status. You need to decide. General rule, when there is, you should return a 5xx server. Okay, what happened? But we don't know ना अगर यहाँ पे तो हमने स्टेटस दिया नहीं, वो स्टेट, let's forget about status for right now. Success as false, success as false, and message as error dot message, right? This would work, right? Success should be this.
console.log res.json success false, error is message. Okay, yeah, that's a pro move. You can error from AI controller. Hmm. Oh, error message. Bro, Kaggle use करते हो? No, भाई, I've never done. Res.json is not a function but a method or res class. These are the most common. Use success with boolean value in the JSON to send. Oh, yeah, bro. Acha. Oh, thank you. Boolean value. That's why acha you send it as false. Okay, और ये जो सक्सेस होगा ये एज ऑब्जेक्ट हम वहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकेंगे. res dot body dot. Okay, 404, 200. These are the most common one. 500 is for error. 200 is for that server is okay. What's 401? What 401 status code? What does that say? Unauthorized. Okay, unauthorized. And 404. 404 is not found, right? Not found. So अगर हमारी free usage खत्म हो गई, अगर हमारी free usage खत्म हो गई, तो where is it? So I can return a status as unauthorized, right? I can, let's return it. Status usage खत्म हो गई. So what is this? Content, you are a helpful assistant. Acha, this is the system prompt that we give to our. Okay, you are a helpful assistant. Acha, role system. Acha, so we need to edit this according to our needs. Okay, we need to edit this according to our needs. SQL में, अच्छा SQL में भी तो ऐड करना है. एक आपका आएगा await. You will have to import SQL. Import SQL from config.db. Await SQL dot. I'll have to see this up. There is a specific code for this too, something in 300. Let me just ask ChatGPT. Okay, so if I set a free limit for a service and a user has exhausted that, what status? No, not rate. No, I meant it's surpassing a usage limit. It doesn't mean too frequent, like a free tier limited service. Usage cap, right? Forbidden. Oh, okay, forbidden. I'm looking forward to build MCP. Is there anyone who wants to participate? Bhai, I have no clue what MCP servers is. Let me search out. 200 for successful request, 3 for redirects, 4 for client errors, and 5 for server side errors. This, you know what? This is helpful. I can actually save this. Useful
status codes. Okay, this makes sense. I'm looking forward to build MCP servers for specific platforms. Is there anybody? What are MCP servers? Let me just start searching. What are MCP servers? Not Minecraft. Tell in terms of a developer. A concept related to how AI models communicate with external tools, APIs, or data sources in a structured or controlled way. An MCP server that exposes structured capabilities to an AI model that provides access to company's internal API. Then the AI can call an MCP server whose internal API. Okay, a service or process running somewhere it exposes a list of tools or endpoint. Acha, so you're like giving some power to an AI model. You're like giving some data through an API for an AI model to use. Model context, yeah, you're giving some context. I mean, that's what my limited brain can comprehend as of now. To an AI model through a defined, think of it like an API layer of plugin host that the model can call to perform external tasks. Okay, and what exactly are you building? Use Notion, bro. It's great. Why for Notion? I I have used Notion. हाँ मैंने बना रखा है. But I hate the fact कि उसमें ना customization और am I doing something wrong? इसमें customization देखो कितनी limited है. सब ऊपर नीचे ही है. That's what I hate. On top of that, OneNote में the best part is, let's say if मुझे कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, तो I simply add an audio note. ये audio note is best. ये I don't think so ये Notion में available है. इसलिए I prefer OneNote. And what's that saying? You're in which year? I'm in my 4th year. It means like if you connect Gemini to GitHub MCP, then Gemini can make repos itself for your account portion. Okay, yeah. So you're giving some external powers to an AI model. And what are you making? Building MCP servers for specific platforms. If there's anybody who wants to participate, contribute. Bhai Wastavi Kadi. Wastavi Kadi, bro. I would have loved to contribute, but the thing is, I have a project जो मेरे को किसी और के लिए करना है. So I don't think so I'll have enough time, and I don't want to waste this opportunity. Tips for third year students, by how can I mean, just stay consistent, I guess. DSA करो और भाई projects बना लेना. Like you can see मैंने DSA तो कर रखा है, but I am really bad in terms of development. That's what I would say, कि try to maintain a balance. और बाकी there are plenty of other people to give you advice. I might not be the best person. Log. Okay, how you get ideas for projects? As of now, अभी तो I do have a few ideas, but how do I get ideas? भाई इतने ideas मेरे को आते ही नहीं है. अभी तक मैंने कोई unique project from my own mind नहीं बनाया. So, bro, which domain you are the best? Domain as in by domain means what? Like, what are you referring to? Generate article? Yeah, I want to know the SQL. Await SQL. Okay. What?
अच्छा, insert. Wait, what's the issue? Is this syntax correct? Let's go to neon.com. Let's check the documentation. Connect कर दिया. Okay. After that, how do you use that? Hmm. Connect your database, import your data, overview, data API, tables. Right. I have how many tables? So we have one table, ID, user ID, prompt, text. Okay. SQL editor, REST API for your database. Okay. Where can I see the documentation? After you connect, clients and tools. Hmm. You do that. I connected. This is confusing as hell. How can I improve my spoken English and coding skill? बता दो डीएसए की प्रॉब्लम्स और अच्छा एरिया में से भैया मेरा मैसेज देख लो. Okay. How can I improve my spoken English and coding skills? By coding skills तो I don't have any special idea. Even I am improving. लेकिन English में just try to watch English content. Try to watch English movies and all that. उससे बड़ी हेल्प होती है. मोनस्टैक जल्दी निपटाने का तरीका बता दो. डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है 3rd ईयर. भाई मोनस्टैक का तो मैं भी अभी उसी पे ही अटका पड़ा हूँ. जस्ट ट्राई टू मेक 1 or 2 projects and learn from projects. Just be him. Hello भाई. Hi. डीएसए कंटिन्यू रखो. हाँ, डीएसए इज गुड इनफ. क्योंकि ऑन कैंपस तो यही होता है. यू जस्ट नीड अ फ्यू प्रोजेक्ट्स विच यू कैन एक्सप्लेन इन एन इंटरव्यू. कि इंटरव्यू में कुछ पूछ लिया तो यू कैन एक्सप्लेन इट. बाकी यू शुड बी गुड विद डीएसए. यू सॉल्विंग लीड कोड. भाई आई सॉल्व्ड 3 प्रॉब्लम्स ऑलरेडी. अगर आप स्ट्रीम के स्टार्टिंग में देखोगे तो आज हमने कर ली. मेरा मेन इंटेंशन तो डेवलपमेंट स्ट्रीम था लेकिन मैंने तब भी थोड़ी 3 प्रॉब्लम्स कर ली. पाथ ब्रो. Damn, code forces is good too. I I don't do code forces. Okay, you just joined. Yeah, you're a bit late. I have done enough lead code for today. New sub. Thank you, bhai. Thank you. Parth, bro, I am. Just give me web dev, bro. I am no special development master. This is like the 100th time I'm saying this. DS से आता है सर भाई. वो भी कच्चा पक्का. The following set is returned. GUI applications. Neon documentation, or we're doing it in Node, right? Node. Connect Node.js application to, right? Install कर दिया, बना दिया, SQL बनाया, constant SQL, ठीक है, right? अच्छा, अभी SQL select, okay, तो सीधा query लिख देनी है. Makes sense. Code process is more difficult. You can
nahi bro, I actually have done like 100 problems on code forces, I would say. This is my profile. पिछले साल करता था, अब मैंने उसके बाद छोड़ दिया. या पिछले साल लगी थी इसलिए उसके बाद मैंने छोड़ दिया है. I've started to focus on lead code. I know code forces. Okay, he's doing this. Insert into creations or values. User ID, prompt, content type, content and type. Okay. Insert into creations. Why isn't my SQL? If I go to my database, I have set up it right. Import neon हमने कर लिया. Import no, neon serverless ही कर रहे हैं हम. ठीक है, अब आपने SQL उसको कर लिया. Database URL. Write constant Postgres, require Postgres, constant SQL. See, I'm confused about this key. Why isn't my the text in this character green? Insert into creations. Why isn't it green like this? Acha, damn, that's good. Yeah, I'm new to this thing. Currently learning AIML. Any advice? भाई, I have never done AIML. मेरे को भी सीखनी है. It's in my to-do list. लेकिन to-do list सिर्फ लंबी होती जा रही है. Which project are you doing now? I am trying to make a full stack project by this guy. Why is this source code? Okay, let me just ignore this. ML part is difficult. Yeah, I've heard people say कि बहुत ज़्यादा theory है and that bores out a lot of people. Oh, ये मैं गलत कर रहा हूँ. यहाँ पर you would want to give content right. Choice is 0 dot message. This would work, right? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी. Await SQL create integrations. Best playlist for DSA in Java. Heyman bro, I do not do Java, but I think Kunal Kushwaha Java में पढ़ाता है. You can check him out. Yeah, I was watching MIT Introduction to ML, but it's too difficult because of advanced math. Exactly. You have to like push yourself to study the theory to actually become like knowledgeable in the field. वरना यार ऊपर ऊपर से तो काफी लोग कर रहे हैं. Import into creations, user ID, prompt, content type. User. Let me check my table.
What is SQL editor? Tables and it creations. Okay, it is creations. Insert into creation or user ID. हाँ, user ID and prompt तो देंगे, prompt कंटेंट भी देंगे, कंटेंट टाइप भी देंगे. इसके बाद we can give values like this guy gave user ID, prompt, content and type. user ID, prompt, content and content type. See, अगर मैं उसका blind copy करता मेरा चलता नहीं because I have named my column as something else. Values would be for user ID you have yeah, values would be user ID. Values would come in a this, right? What's the thing? Could not find any user ID. Okay. User ID and we have the prompt. We have content. अच्छा, content है अपने पास. And content type is text. Content type तो text है ना, right? Article, okay. Content.content.com. Why is the syntax not highlighting, bro? That's the issue. Is Node.js. Kunal भैया की playlist incomplete है. हाँ, his playlist is incomplete, I have heard. Are you participating in GSOC 2026? भाई, that is what I am planning to. You can see, like, I am trying to, like, अभी time तो है, इसलिए I am trying to push my development to a good level so that I can actually participate it. In fact, I was like looking through this site, goodfirstissues.com, ताकि मैं कुछ open source में start तो हो सकूं, like JavaScript, TypeScript and C++. And I was looking at these low start repositories जैसे add solution for tree diameter. Okay, so this too is a Leetcode repository. See, it has already been assigned to Ashanka. Add solution for tree matching. What a, अच्छा, ये हैकटोबर फेस्ट के लिए है क्या? हैकटोबर फेस्ट के लिए वो जो घटिया से PRs हैं. हाँ, ये हैकटोबर फेस्ट के लिए है. एनहांस प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, कलर कॉन्सलेशन, न्यू प्रोजेक्ट लाइट थीफ. आई वाज लाइक test validity and Moffat type found 124 stars. This is too big. This looks too intimidating to contribute to. Add support. What is this? I am start working on that issue. Hi Raghav, go with magics. Yeah, I was hello Witch here. Can't because of my age. True.
तो बट आई एम इन 12th एंड इतनी मैथ्स तो वहाँ भी नहीं है. तो आर यू नॉट लाइक preparing for JEE? Which database are you using? Is it MySQL? Is Israel Ansari, bro? Israel Ansari, I am using Neon serverless database, लेकिन वो मतलब at its core it's a Postgres database. Yes, so it's SQL. It's a SQL database, not MySQL though. I'm in my 4th year. No, Jay, bhai. I would say if I if I had a chance to give up everything and go back to 11th, I would have done that in an instant so that I could prepare for JEE. Because you can't even understand how much of an advantage does a good college gives you, bro. I'm telling you. Just Beham, you want to see one thing? Let me show you. Let me like solidify my statement. Unify apps NSUT. NSUT hiring. Let me show you one thing. NSIT. Relatable. I do not regret giving J. Exactly. Read this post. Just being. I don't want to do J. That's why lol. I mean, at the end of the day, you have your free will, but bhai, the most probable case is you are going to regret not working hard for J. बहुत बहुत ज़्यादा help होती है यार J से. I mean, do as you like, but still. Yes, I will watch my sure. Rinkumina, what college are you in? GitHub Fateh02. I'm Fateh Singh. How to reach me out? Okay, you have 10 followers already. Let me follow you. Third year computer science student. All of my projects are available. What did you most recently commit to? Where is your that app, that game that you showed me? Metaspace. Bro, what are these commits? Metaspace is a full stack multi. What is your tech stack? But bhai, this commit is matlab this can be a disadvantage because when I went to an interview, the interviewer opened my GitHub and looked at my commit history to check that am I like even writing proper commits or not. Next.js, React, TypeScript, Tailwind. Okay, you're using Superbase, Socket.io. Acha, you've used integrated WebRTC also. Why your installation guide isn't complete? Or is it? Git clone, backend, yarn install. Have you used Docker? Doesn't look like it. Backend front. Yeah, suggest me what to do in first year, bro. I need some advice. Bro, just like get started. DS से देख लो.
आई मीन डीएसए तो यू कैन जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, एक क्वेश्चन भी कर लो डेली का बहुत रहता है फ्रॉम फर्स्ट ईयर. यू कैन यू रिव्यू भाई तीर्थ. Why good not the students are doing well? You can see students around you, everyone working hard and finding a good friend is very difficult in tier 3 colleges. Yeah, bro. Tier 3 colleges तो अब I mean it's all about luck. अगर आपने जेई में अच्छा नहीं करा तो luck will be against your favor. I'm a beginner. Which language should I learn for my placement? I don't know, bro. Just if you want DSA, if you ever want to do CP, you can go with C++. You can you review my portfolio? Hi, Tees, I would love to do it, but probably at the end of the stream. Let me just continue on this project I'm working. I'm sorry. At the end of the stream, I'll do it. Sure. SQL database में भी add कर दिया. Okay, so user ID prompt और plan निकाल के plan premium नहीं है या free use और free ठीक है. Response में ये डाला, content ये रखा. SQL. ठीक है. Let me check my database URL. So for that, I'll have to hide my screen. PostgreSQL. Where PostgreSQL user and password. अच्छा, okay. हाँ, that's how you do it. Import करा और ये यूजर और पासवर्ड, मैंने यूजर और पासवर्ड सही डाला है. क्या होगा? हाँ, तो there isn't an issue. Okay. Sure, no worries. What are you building? Bhai, I'm just trying to build a full stack project by following a tutorial. I am really bad at development, so that's why I'm trying to learn basically. I'm in my fourth year. Fourth year, bhai. That's the whole point. I'm in my fourth year. I'm premium नहीं. Okay. तो यहाँ से मैं response पास कर तो We have returned the response. Series 2200 content. Okay. नहीं, अगर मेरे पास में Okay, we didn't add success. मुझे एरर आए तो मुझे पता चल जाए. He just wait. What's the difference? Key name. Oh, okay. So that's just the short form. मैसेज कंसोल में हमारे यूजर साइट को सिंपली तो यहाँ पर हमारा जो लॉग आर्टिकल जनरेट के लिए है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है.
पेस्ट कर दूंगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पर ब्लॉग टाइटल यहाँ पर लिखना होगा ब्लॉग। अच्छा, he's doing it for a blog too. Okay, so this is for your bro. User ID, you have your prompt, plan प्रीमियम नहीं है तो फ्री यूजेज लिमिट रीच। जेमिनी फ्लैश में वही यूजर दिया, प्रॉम्प्ट दिया, कंटेंट में वो दे दिया, क्रिएशन यूजर आईडी, प्रॉम्प्ट, कंटेंट टाइप आर्टिकल नहीं ब्लॉग होगा। ओके, प्लान प्रीमियम नहीं है तो फ्री यूजेज बढ़ा दो, एरर फ्रॉम एयर कंट्रोलर जीएस। ब्लॉग टाइटल, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यूजर का आईडी पास करूँगा एंड यहाँ मुझे लेंथ को पास करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हटा देता हूँ, प्रॉम्प्ट को यहाँ पर यार इसमें लेंथ नहीं चाहिए होगा हमें। वेट, बट हाउ आर वी यूजिंग लेंथ इन दिस? उसने यहाँ लेंथ ली तो, बट ही डिडंट यूज इट, he didn't use length in his above code, right? मैसेज, ठीक है, एसक्यूएल डीबी डॉट एक्चुअल का पूरा नाम यहाँ पर दीजिए, ठीक है, फाइल को रीड करता है। Yeah, he didn't use the अच्छा max tokens में you end length. Okay, I missed it. It's after max tokens. Max tokens. All right. The result, we gave him a prompt. Yeah. And that. Okay. और पास करूँगा यूजेस कंटेंट, मैक्स टोकन जो यहाँ पर वो कर देता हूँ 100, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको। Okay, he's giving from his own side. Same by fourth year. Is Leetcode fully free? I'm in my first year and yeah, bro, Leetcode. I mean, there is a premium version of Leetcode, but you would not need it, at least as a student. Leetcode is the best, and Leetcode covers all spectrum of questions that general MNCs ask. I mean, if you're going for something like Uber, then you'll have to do competitive programming. I checked out Codeforces after a few problems. Codeforces doesn't Codeforces doesn't have a paid plan. What are you talking about? No, Codeforces doesn't have has paid plan. I don't think so. They have does not have a, yeah. It's free to use. What do you mean? और dev आता. Codeforces is free to use. Fourth year Leetcode night हूँ और dev आता. भाई then what's the issue? And we're not same. मैं Leetcode night नहीं हूँ. मैं Leetcode में like I'm working on making my Leetcode better. लेकिन dev नहीं आता ना मुझे. You at least to know dev. I don't know dev. I have completed my graduation in BBA Digital Media and Marketing. Can I opt for data analytics? By Sony TV, I'm not qualified to answer. I'm sorry. So here he's gonna add a max tokens as 100. What is the issue? Expected this.
this. What's the issue, bro? Acha, I'm writing within the. फंडेड वाला यहाँ पर टोकन यहाँ पर ऐड करने का है एंड उसके बाद टूल्स जो कि हमारे यहाँ पर सेमी लाइन का और एसक्यूएल में जो मैं यहाँ पर आर्टी में यहाँ कर रहा था इसी से बोल रहा हूँ ब्लॉक टाइटल करना आर्टी एंड ब्लॉक तो एसक्यूएल इंसर्ट में यहाँ पर क्रिएशन यूजर आईडी प्रॉम्प्ट कॉन्टैक्ट टाइप और यहाँ वैल्यू में हो जाएगा यूजर प्रॉम्प्ट और कॉन्टैक्ट और ये हो जाएगा ब्लॉक टाइप Oh, अच्छा values में भी we will have to give in commas क्योंकि वहाँ पे तो as string जा रही है database में. Okay. This needs to be in commas. ठीक है तो ओके तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है एंड सिमिलरली मुझे यहाँ पर You know what? Let me still ask GPT if there are any errors. Check for any errors. Free usage check after res.status.json. You need to return to stop the function, otherwise the continues. Okay. This is attached to request. The free usage part. हम auth.js में भी तो how we add request dot free usage. Premium plan नहीं है या फिर यूजर बट हाँ वी एडेड वो हमने ऐड कर रखा है चिल आउट चैट जीपीटी. अगर प्लान प्रीमियम नहीं है रिक्वेस्ट और प्लान chill out destructuring content extra comma after length is harmless but unnecessary. Okay, OpenAI response. In OpenAI is an object if you want only text. Acha, right, we want only text. Where is a controller? We want only text. Dot, what did it say? Dot content. Looks fine if your content is a string. If it contains code, codes the template tag should escape it probably. Updating free usage issues. Free usage is not defined. You need to use the current value. Oh yes, we'll have to destructure it. Request. Right, free usage ले लिया. अब सिर्फ free usage कर ले लो. Right, request आपने destructure कर लिया क्योंकि हमने request में add कर दिया था यहाँ पे. Right, अब यहाँ से destructure करके check करो. Free usage plus 1, this would work too. यहाँ पे भी you can just do it. Constant free usage equals to request. That is it. अगर आपकी free usage 10 से ज़्यादा हो गई है तो 41 करके forbidden होना चाहिए. 403 is forbidden. Makes sense. And
catch block. Good, but you should also set a status code, not 500. हाँ तो code forces should not ask for money with this shitty UI. भाई शुरू में honestly like there's no debate to it. Code forces का UI बहुत बेकार है. Data analytics is more of an engineering domain than PBA. I'm a first year student. Can you guide me for DSA? भाई see, make your mentors carefully. Like I'm not qualified to be anybody's mentor. भाई तुम dev कहाँ से सीख रहे हो? भाई अभी एक tutorial चला तो रहा हूँ. I learned from projects. It was CodeShift. I started with the easy problems on CodeShift. Then the next medium and hard problems required me to pay. Okay, हाँ वो शायद करता होगा. I've never done CodeShift. वो शायद करता होगा. Are you doing job or studying in college? I am in college. And here you Yashikant, yeah, Leetcode is more fun, 100%. I enjoy doing Leetcode more, but Yashikant, I started the stream by solving 3 Leetcode questions. After that, my main focus is भाई मैं Leetcode बहुत करता हूँ, development भी करनी है. इसलिए that's why I'm doing development right now. Leetcode is more fun, absolutely. Are you doing job or studying in college? It's fine to use. I'm doing coder. Anyone want to be my partner? If anybody wants to be Nitro's partner, they can. Bro, Leetcode is more fun. If you go rewind the stream, you can see I started by solving Leetcode. Any projects we can build just by using C? I mean, you obviously, I think you can. I'm not aware. I'm not aware. What college are you from? I'm from IPU Delhi. GPT told me one thing, that the content, make sure your middleware free usage हो रहा है, SQL insert कर रहे हैं. Ensure content is a string. If it contains quotes, the template tag should escape it properly. This is something we have to see about. But yes, generate block title में free usage हमने destructure कर लिया, 10 से ज़्यादा है तो हम कह रहे हैं, और max token दे रखे, dot content कर दिया, okay. Insert into SQL creation. Private metadata free usage एक बढ़ा दी, res dot status. And wait, one thing that it told me to end, return. Yeah, I'm not returning. ये बड़ी गलती कर रहा था मैं. अगर आपकी फ्री यूसेज हो गई है कंप्लीट, तो यू नीड टू रिटर्न. आई स्किप्ड राइटिंग रिटर्न. यहाँ पे भी आई थिंक वी नीड टू डू कैच res.json. good, but you should also set handling max token limits. Okay, this I'm from IPU. मैं यहाँ से फिर से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा. एंड अब जो मेरे पास यहाँ होगा इमेज जनरेट करने, तो जनरेट इमेज में यहाँ पर कर देता हूँ. ठीक है, सो जनरेट इमेज के अंदर भी मुझे यहाँ पर बस यहाँ पर एक और पास करना होगा पब्लिक करके. तो पब्लिक और यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट बॉडी और काउंट प्लान, बट यहाँ पर मुझे फ्री यूजेज दूंगा नहीं, इसलिए मैं फ्री यूजेज हटा देता हूँ. एंड सिमिलर यहाँ पर अच्छा, फॉर इमेज देयर इज नो फ्री यूसेज. तो मैसेज मैं काम करता हूँ, मैं दूसरा मैसेज यहाँ पास कर देता हूँ. सो दिस सारी क्लियर यहाँ पर दिस फीचर इज ओनली. बट देन फ्री यूसेज वाला वो भी तो हटाओ. फ्री यूसेज चाहे जिसकी भी बची हो, ही शुडंट बी अलाउड. ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो ये सी
Bro, this guy is doing a bit of मैं mistakes. यहाँ पर फ्लैश दैट यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर मुझे ये यूज़ करने की जरूरत है। ओके, तो ये जो रिस्पॉन्स एआई है वो मैं यहाँ से हटाऊँ। उसका मुझे यहाँ पर इमेज मैं जनरेट करूँगा वो क्लिप ड्रॉप एपीआई मैं यहाँ पर क्लिप ड्रॉप एपीआई यूज़ करूँगा। बेसिकली उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली आता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा क्लिप ड्रॉप एपीआई, क्लिप ड्रॉप, और यहाँ पर मैं सिंपली आऊँगा इसके अंदर में एंड टाइनी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ गूगल से मैं यहाँ पर टाइनी इमेज के एंड Hmm. Can I start with Leetcode if I'm only familiar with C? I mean, does Leetcode have language-wise problems? See, problems aren't restricted to any language. You can, okay, Parth bhai, by even I'm about to end the stream. Uh, Anshu Retanim, what's the name? Leetcode. In Leetcode, problems aren't restricted to any language. आप किसी problems are independent. आप उसे कौन सी language से solve करते, that's your choice. You can go like watch it yourself. Oh, okay, like any problem. Now this is a random problem and you can use any language from these. Who even uses Elixir? But you can use any language. There is an option for C. I mean, if you're doing C, you might as well learn C++. College में तो सिखाएंगे ही. I'm from my fourth year. Generate title. Image, and we would not even require to check free usage here. This feature is only available for paid users. OpenAI.chat. Acha, OpenAI say we wouldn't be using this. We'll be using clip drop API, right? Clipdrop.co. Text to image. Ways of scaling, cleanup, remove text, replace background, text to image. Okay. I only have C for now. हाँ, oops तो is actually really important. Interviews में भी काफी पूछा जाता है. College, I am from MATE, भाई MATE. Shall I study DSA or web dev or both? Devansh Jain, I would say at the end of the day balance तो कर चलना पड़ेगा दोनों को. You can explore though web dev में. You can start with web dev क्योंकि DSA में अगर कॉलेज में C++ पढ़ा दे then you can focus on DSA. C++ या कोई भी language. CSE branch, but some of my PSA has got no futures in 5 years or 7 years. I don't know, bro. Maybe the student too. How can I even tell? I have no idea. The request must be HTTP post and its body. Okay. API always returns a PNG. Begin claim. Further calls will be rejected. Okay. We have 100 free calls.
Hmm. Okay, wait. This is the format. Form equal to new form data. Form dot append prompt. Acha. And you fetch it. Dot then response dot then buffer. Buffer here is a binary representation. Okay, these are the codes. So we restructure it using response. Let me copy this. This would be your prompt, right? This would be your prompt. Method would be post. You need to have your API key. Where? How do I get my API key? Okay, I'll need to have my API key. I'll get that. Then buffer. Buffer is a binary representation of the returned image. W subscribe account. What is it? 69, I assume. Okay, it's 71. That's why. ठीक है, कोड में आने के बाद एंड यहाँ भी हो जाएगा हमारा फॉर्म डाटा. Why can't we name it form? और यहाँ पर फॉर्म डाटा कर लेता हूँ. फॉर्म डाटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा एंड यहाँ भी हो जाएगा हमारा फॉर्म डाटा. ठीक है, प्रॉम्प्ट एंड इसके बाद मुझे पास अवेट फंक्शन. ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ पर एपीआई को हिट कराना होगा. कौन से एपीआई को हिट कराना होगा? करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा. ठीक है, तो ऐड जो है तो मुझे यहाँ पर पास कर. Okay, so I need to learn. Need to call rest.json explicitly. Hmm. Okay. Okay. Saurabh saying, bro, DSA तो I would say I'm proficient in DSA. DSA rounds तो clear हो रखे हैं मेरे काफी. Like in a recent interview I gave, I got stuck in system design.
I cleared the OA, I cleared the फिर पहला interview था that was based on DSA plus resume. Then after that there was a system design. I don't know, I feel like I should balance both. इसलिए थोड़ा मैं डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा हूँ ब्रो. DSA तो मैं कर ही रहा हूँ. You can check out my streams. DSA तो मेरा रोज चल ही रहा है. And अब तो I even do contests. Where shall I start learning web dev from that I can follow? Bhai, again, Devansh Jain, I feel like there are a lot of other better people to ask this for because मैं खुद सीख रहा हूँ अभी. I can't tell you the best. When I'm myself learning and exploring, you're likely calling OpenAI. Many timeouts, error handling. Axios is slightly better in this scenario, but it's easier to manage. Okay, so that's why he's using Axios. यहाँ so and What did he give in headers? अच्छा API key. Okay. You know what I feel like I can actually I feel like he has still his API key working. Why not I try it? ओके. तो इसके बाद यहाँ पर AI कंट्रोलर में आपको आना एंड यहाँ जो की है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे करना होगा प्रोसेस. Hmm. So he's made a form. उसके अंदर append कर रहा है prompt with this prompt. Okay. And then await Axios dot. It's a post request or you need to send a post. Okay, you need to send a post request. ठीक है. To that link with form data. Form data would be your body. और फिर अच्छा headers और response type. Base 64 image. Okay, so he is converting the binary encoding to your image. Okay. What's your project about? Oh, I'm just making this project. I'm just following this tutorial. तुम फिर सिस्टम डिजाइन पढ़ो फिर प्रोजेक्ट क्यों. हाँ, आई एम ट्राइंग टू लाइक बिकम बेटर इन एवरी वे पॉसिबल ना सौरभ भाई. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी तो मेरी काफ़ी वीक है. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. सिस्टम डिजाइन भी पढ़ ही रहे हैं ब्रो. axios.post. Right, you send your form and within this I think headers and what response type. Add a buffer. Okay, I need to get my API key. I have not yet got my API key. IKCA में हूँ. I am in my 4th year.
Okay, I think I'll end the stream here now. I'll probably continue in the night. Thank you for all those who joined. Bye bye.